সোমবাৰে গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ হাৰাফুটাত কংগ্ৰেছৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক সিঙে কয়, উপনিৰ্বাচন হ'ব লগা বিধানসভা সমষ্টিৰ মই গাঁৱে গাঁৱে গৈ বুজ লৈছোঁ। অসম চুক্তি ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কৰিছিল। লগতে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, গোসাইগাঁৱৰ এইখন ভূমিৰ পৰাই প্ৰয়াত মিথিয়াছ টুডু 7বাৰ বিধায়ক হৈছিল। আনহাতে বিটিচিত শাসনৰ বাঘ জড়ি থকা প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটত। হিমন্তৰ কথামতে লৰচৰ কৰে। AIUDFৰ বদৰুদ্দিন আজমল নিজেও বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈছে। মই আজি মঞ্চৰ পৰা কওঁ যে জুৱেল টুডু জিকিব সেয়া নিশ্চিত। সকলো মাতৃ সমাজক আহ্বান জনাইছোঁ, হাতৰ চিনত ভোট দিয়ক। নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে 100+ লিখা পোষ্টাৰ সত্য হ'ল। ডিজেল পেট্ৰলৰ মূল্য 100 কৰিলে। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বহু সংখ্যক মানুহ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকে উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য আৰু বহুতো দলীয় নেতা। তাৰ বিচাৰ 30 তাৰিখে হ'ব। আপোনালোকে যিটো সুধিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিৰোধী দলক ভোট দিলে পইতা ভাত খুৱাই ভাল, সেইটো কথা সুধিছে নহয়। তাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক ভৰিত ধৰি যি সময়ত বিজেপিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আছিল আৰু বিজেপি বিৰোধী আছিল। সেই সময়ত তেওঁৰ বিজেপি কৰ্মীসকলে পইতা ভাত খাই চলিছিল নেকি? আজি ৰাজস্থানৰ বিজেপিৰ লোকসকলে পইতা ভাত খাই চলে নেকি? দিল্লীৰ বিজেপিৰ লোকসকলে পইতা ভাত খাই চলে নেকি? আজি আপোনাৰ ছত্তীশগড়ৰ লোকসকলে পইতা ভাত খাই ঘূৰে নেকি? গতিকে এনেধৰণৰ সস্তীয়া তৰল কথা কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত মই শুনা নাই। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপনিৰ্বাচনত অহাটো আমি প্ৰথম দেখিছোঁ। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত কোনোদিন উপনিৰ্বাচনত অহা নাই, কাৰণ চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলে ৰাইজে ভোট দিবই। এই উপনিৰ্বাচনত যিহেতু আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে 27,000 টকা প্ৰতিজন মূৰত আপোনাৰ ঋণ আপোনাৰ আকাশত আহি আছে। এই দুখীয়া মানুহ গোসাইগাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ টেক্সৰ পইচাৰে আহি আছে। কথাবিলাক গম পাইছে যে তেওঁ এতিয়া ৰাইজে বেয়া পাইছে, সেইকাৰণে গলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে। আজমল ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়া মানে বিজেপিক দুটা ভোট দিয়া ৰাইজে গম পাই গৈছে। আজমল ডাঙৰীয়া জিকিবলৈ অহা নাই, আজমল ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিজেপিক সহায় কৰিবলৈ আহিছে। সেই কথাখিনি ৰাইজে এতিয়া গম পাইছে। যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া সেই চৰকাৰৰ লগত হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া আছিল। যেতিয়া BTR ইলেকশ্যন হ'ল, তেতিয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই BTRৰ উন্নয়নৰ গোটেই পইচাবিলাক খাই পেলালে। আৰু তেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিলে যে মই গোটেই পইচা খোৱা নাই, আধা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খালে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে মই চৰকাৰ বনোৱাৰ পাছত তেওঁক হেণ্ডকাপ লগাম। আৰু তেওঁ ক'লে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা য'ত থাকিব মই তাত নাথাকোঁ। এতিয়া চব লগ খাইছে। ইয়াৰ কাৰণটো কি? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰমোদ বড়োৰ শ্লোগান কি আছিলে? প্ৰমোদ বড়োৰ শ্লোগান আছিলে ডিভাইড আছাম 50-50। হাগ্ৰামা মহিলাৰ শ্লোগান আছিলে ডিভাইড আছাম 50-50। এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত কি কয় পূব পশ্চিম, হিমন্ত বিশ্ব কুমেৰু আৰু কুমেৰু। যেতিয়া ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া পইচাৰ কথা আহিলে, এতিয়া ডিভাইড আছাম 50-50 নহয়, ডিভাইড মানি 50-50। গতিকে এই ডিভাইড মানি 50-50 ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে BTRৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে, BTRৰ ৰাইজৰ কাৰণে অহা টকা পইচা যাতে এইবিলাক মানুহে আত্মসাৎ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি জুৱেল টুডু ডাঙৰীয়াক এই অঞ্চলৰ এজন অতন্ত প্ৰহৰী হিচাপে অসম বিধানসভালৈ ৰাইজে জিকাই নিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোসাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজক মই হাত জোৰ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথা আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে কৈছিলে যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা পইচা লয়। আৰু তাৰপাছত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা 54 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাঁহি পেলাই ল'লে। তাৰপাছত মুখ্যমন্ত্ৰী আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিজন মেইন মানুহ চিৰাজুদ্দিন আজমল, তেওঁ ক'লে এজন শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী। আজমল ডাঙৰীয়াই টিভিত বহি পেলাই ক'লে যে মোৰ ব্যৱসায় আগৰ গছৰ ব্যৱসায় এতিয়া ভাল হৈছে। এতিয়া গোসাইগাঁৱৰ ৰাইজে এইবিলাক কথা বুজি পায় যে কোনে ৰাজনীতিক ব্যৱসায় কৰিছে, কোনে ৰাইজৰ নামত ব্যৱসায় কৰিছে, সেইবিলাক মানুহক ৰাইজে চিনি পায়। আৰু তাৰ বিচাৰ 30 তাৰিখে হ'ব। আপোনালোকে যিটো কয়, কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মানুহক অশালীন শব্দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই কথাক আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ।
কাৰণ আমাৰ অসম গোৰ্খা সন্মিলনৰ উপসভাপতি, এসময়ত অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ভাস্কৰ দাহালক, আমাৰ জুৱেল টুডুক, আমাৰ শৈলেন দাসক তেখেতে গৰু বুলি কৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি অসমৰ খাটি খোৱা মানুহখিনিৰ প্ৰতিনিধিসকলক গৰু বুলি কৈ তেওঁ সমগ্ৰ গোৰ্খা জাতিক অপমান কৰিছে, সমগ্ৰ আদিবাসী জাতিক অপমান কৰিছে, সমগ্ৰ খাটি খোৱা মানুহখিনিক অপমান কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শগুন যিমান ওপৰত উৰক, শগুন যিমান ওপৰত উৰক ফুলনি দেখা নাপায়। শগুনৰ ধান্দা বেলেগত থাকে। আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখন ইমান ডাঙৰ, তাত বহা এই মানুহজনৰ মনটো ইমান সৰু যে মানুহক সদায় তেওঁ জন্তু দেখে। कोई ठीक नहीं रख पा रहा है, उनका एमएलए छोड़ के बीजेपी में जा रहा है, वो स्टेट क्या चलाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि इसी चुनाव के अंदर 2 हमारे साथी वो भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कर लिया, और उन दोनों चुनाव क्षेत्रों के अंदर भी आप देखें कि लोगों के अंदर बहुत बड़ी नाराज़गी है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी खुले मैदान से कहते हैं कि कोई भी छोड़ के आए और हम 2000 करोड़ रुपए देंगे। तो आप सोचिए कि इस माइंडसेट के साथ, इस सोच के साथ ये सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री चल रहा है कि वो खरीद फरोश करना चाहता है, वो लोगों को खरीद के लेना चाहता है, लेकिन आसाम के लोग अपना वोट नहीं बेचेंगे। ज़रूर नेता जरूर अपने साथ बिक सकते हैं, अपना गाड़ी बनाने के लिए, घोड़ा बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूर पैसा ले सकते हैं, लेकिन जनता, आसाम की जनता अपना वोट नहीं बेचेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, उनके बात के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ। मैं तो ये उनसे कहना चाहूँगा कि 5 साल उनकी सरकार रही, आसाम के अंदर क्या हुआ? 6 महीने से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो बड़े बड़े वादे करे थे, 351 का वादा करा था चाय बागान के लिए, 5 लाख नौकरी हमारे युवाओं के लिए करी थी, हमारी माता बहनों को 800 रुपये से 3000 रुपये बढ़ाने की बात करी थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करी थी, महंगाई की बात करी थी। क्या वो करा है उनने? इससे अच्छा तो सोना ही अच्छा है कि जाके मर जाओ। आज ये ऐसा हालत हो गई है कि हमारा नौजवान जो व्यक्ति है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी नाराज़गी है। मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा आखिर में कि आज आसाम के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 27,000 रुपये का ऋण मुख्यमंत्री ने ले रखा है। जो हेलीकॉप्टर से घूमता है, वो जो पूरा आलीशानी से रहता है, वो सारा इन गरीब लोगों के खून और पसीने का पैसा और उनकी कमाई का वजह से वो खा रहा है। मुझे बहुत ही पीड़ा हुई और दुख हुआ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरे बीटीसी एरिया को ख़त्म कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा पीड़ा ये हुई है कि जो बोडो मूवमेंट से जो लोग, जो रीजनल पार्टी निकल के आई है, चाहे वो बीपीएफ हो, यूपीपीएल हो, इनने भी भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन कर ली है। इनने अपना सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग कर रखा है। तो आज इस बोडोलैंड के इलाके के अंदर, बीटीसी के इलाके के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। बाकी तो जो पार्टीज हैं वो सब इनकी जेब में है। जो हक माननीय राजीव गांधी जी ने इस पूरे आदिवासी क्षेत्र को दिया था, बोडोलैंड को असम अकॉर्ड के द्वारा, उसको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसमें कोशिश कर रही है। आज ये अस्तित्व की लड़ाई है बोडोलैंड की, और आप देख रहे हैं एक तरफ से बहुत बड़ी नाराज़गी है कि जो एक अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड को ये समाप्त करने के लिए, यहाँ के अधिकार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे बीटीसी के जो इलाके हैं, जो भी 6 शेड्यूल के जो इलाके हैं, उसके अंदर ये सरकार करप्शन कर रही है। ये सरकार ने एक तरह से अपना धंधा और पानी बना रखा है, चाहे वो कार्बी आंगलोंग में माइनिंग की बात हो, चाहे आपके जो यहाँ फंड आते हैं उसके अंदर 50% अपनी जेब में डालते हैं ये। तो ये एक कमाई का धंधा, काला धंधा बन चुकी है बीजेपी के लिए। और ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों को मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे इलाके को स्थिर रखना चाहती है और यहाँ से बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है। वो गणेश जी को दूध भी पिला सकती है, वो रात को दिन भी बना सकती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आसाम का नुकसान करा है,
उसकी भरपाई जरूर है कि बहुत लंबे समय तक आसाम के लोगों को भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो सिलचर का इलाका हो, चाहे वो कार्बी आंगलोंग का इलाका हो, चाहे वो वेस्ट बैंक का इलाका हो, चाहे ब्रह्मपुत्र का इलाका हो, चाहे लोअर असम का इलाका हो, चाहे वो बीटीसी का इलाका हो। इसके अंदर जिस तरह के इनने बीज बोए हैं नफरत के, लोगों को डिवाइड करा है, और इस पूरे एक जो आसाम का डेमोग्राफिक है, आसाम की अलग अलग ट्राइब्स हैं, इनको जिस तरह से झगड़ा कराने का काम इनने जो करा है, वो आसाम के लिए, आसाम की राजनीति के लिए, आसाम के अस्तित्व के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है।